Uh, this is our lesson number 10, and we will discuss Urdu meaning of book 8 test to IELTS academic reading. First word which you can see here, this is ensure. Ensure means to make sure that something happens or is definite. किसी चीज़ को इंश्योर करना कि वाकई ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, so इस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं. This is verb, or we can, there are different examples. You can see the book ensured his success. After this, gravity of the matter. ठीक है, this is, वैसे gravity कहते हैं कशिश को, attraction को. तो gravity हम लोग यूज करते हैं, its value is 9.8. Gravity, the force of attraction that objects in space towards each other, right? The force that attracts objects in space towards each other. So this is, after this next word, molten. Molten is from melted, molten lead. ठीक है ना, पिघला हुआ सीसा, a steam of molten lava. Pour, drain, flood, pour, undelna, tears poured down his cheeks. Thick black smoke was pouring out of the roof. ठीक है जी. So pour the sauce over the pasta. So this is how किसी चीज का किसी चीज के ऊपर डालना, we can remember this word. Next word which is important, that is ripple. Ripple, a small wave on the surface of a liquid, especially water in a lake, etc. Noun है ripple. The air was so still that there was hardly a ripple on the pond's surface. कि तालाब की सरफेस पे कोई लहर भी नहीं बनी, इतनी ज़्यादा साकिन जोन सी है वो एयर है. Spinning, there is another word, it means that uh, revolve, reel, right? घूमना, spinning mills. And spinning, you can say हमारे घरों में एक spinning machine होती है, clothes spinning machine. The art or the process of twisting wool, right? Cotton spinning, hand spinning. So there are different words. Tremor, ये earthquake से related, a small earthquake in which ground shakes slightly. This is what we can use. Unblemished, not spoiled, damaged or marked in any way. Flawless, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बिल्कुल ठीक ठाक है. अनब्लेमिश्ड एडजेक्टिव है, और उसके अलावा ही हैड एन अनब्लेमिश्ड रेपुटेशन. रेपुटेशन के साथ यू विल यूज दिस वर्ड, स्किन के साथ यू विल यूज दिस वर्ड. So just we need to understand what are different possible combinations where we can use these difficult words or these vocabulary words. Underside, compound word. Bottom, right, the side or the surface of something that is underneath. Accustom, accustom somebody to something is gradually custom company rules to his will. Adapt करना किसी चीज को, accustom to something, इस तरह you will remember. Dazzle, blind, and this is again verb. You can remember in this way, if a strong dazzles, if a strong light dazzles you, it is so bright that you cannot see for a short time. यकदम काफी ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में है और आप कुछ देर के लिए कुछ ना देख सकें. तो dazzle you, this is verb. Dazzle somebody, to impress somebody a lot with your beauty skills, etc. चुंधिया देने वाला, sparkling light है, इस तरह dazzling, we can use dazzling light भी यूज कर सकते हैं और dazzle as a verb भी यूज कर सकते हैं. Draught, draught, a flow of cool air in a room or other confined place. There's draught in here and I was sitting in a draught. Okay, next countable noun, ये भी countable, draught जो है this is countable. Next countable, a one continuous action of swallowing liquid. घूंट जिसको कहते हैं हम लोग. The monk swallowed. He took a deep draught of his beer. Medicine in a liquid form. A sleeping draught. Embark, embark or disembark, जहाज पे, बैरी जहाज पे सवार होना.
to get onto a ship, to put something onto a ship. So embark mean सवारी से मुतल्लिक this is word. नेक्स्ट वर्ड इज फॉसल रिमेन्स जो सी हैं स्केलेटन ढांचा जो है उसको हम फॉसल के तौर पे यूज करेंगे और दिस इज वेरी कॉमन वर्ड पीपल दे you can read in different passages in IELTS. And after this, hemisphere. Hemisphere, one half of the earth, especially the half above or below the equator. ठीक है, the northern hemisphere, southern hemisphere हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं. Offshore, seawards समुंदर की तरफ, in the sea, not from far from the land. ठीक है ना. A ship anchored offshore. If the wind is blowing offshore, it is blowing from the land towards the sea. Okay जी. Next is opportunism. The practice using situations unfairly to gain advantage. जैसे exploit होता है ऐसे ही opportunist कहते हैं ना, इस तरह opportunism. Perish. Decay के साथ है word. To die, especially in a sudden violent way. Perish. A family of four perished in the fire. A family of four perished in the fire. Thousands perished at the hands of invading forces. हजारों बंदे उनकी डेथ होगी. To be lost or destroyed. Perish. अच्छा जी, उसके बाद प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कहते हैं an official action or decision that has happened. Precedent, that has happened in the past and that is seen as an example or a rule to be followed in a similar situation later. The ruling set a precedent for future जी लाइबल केसेस. अब ये प्रेसिडेंट है कि आपका कोई वाक्य हुआ, आपने उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया, अब वो पुराने वाक्य प्रोसीडिंग्स जो उसकी हुई उसके साथ आपने बना लिया कि चूंकि उस केस का फैसला ऐसे हुआ तो आगे भी ऐसे होगा, तो इसको आप सिंपली ऐसे ही याद करें. अ सिमिलर एक्शन और इवन दैट हैपेंस अर्लियर. कोई भी एक्शन काउंटेबल अनकाउंटेबल में हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स आप इसको प्लूरल के तौर पे लिख सकते हैं. कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हुए, कुछ वाकयात हुए जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे डिफरेंट एग्जांपल्स को कोड करने के लिए, उसी तरह का डिसीजन लेने के लिए. प्रोलिफरेट. जी नंबर इंक्रीज हो जाना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेशली इन आइल्स कॉन्टेक्स्ट. बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन द सब्जेक्ट हैव proliferated ओवर द लास्ट ईयर. बढ़ गए, ज्यादा हो गए. सीसॉ एक बेसिकली स्विंग है, झूला है बेसिकली. पीस ऑफ इक्विपमेंट एक ऊपर नीचे होता है, यू कैन सी सीसॉ. आई विल शो यू दिस. जी, these are some of the images, seesaw, and you have some idea what this word is. Okay, soaring. वैसे तो soar there are many. Soaring mean if the value or amount or level of something soars, it rises very quickly. Soaring cost, soaring price, soaring temperature. ठीक है जी. So to rise quickly and smoothly up to into the air, the rocket soared up into the air, soared into the air. Her spirits soared. ये जी सेकंड मीनिंग है सोर का, इस तरीके से यूज. टू फ्लाई वेरी हाई इन द एयर, सोर. ओके, उसके बाद when music soars it becomes higher or louder. Next is staple, forming a basic, large or important part of something. Another word is acute. Acute कहते हैं वेरी सीरियस और severe. Acute pain, काफी शदीद जो पेन है उसे acute कहेंगे. Acute shorter, shortage of water.
acute environmental problems. Why I am repeating these words? Actually आपने इन्हीं words collocation से बचने के लिए ऐसे issues के आप out of context लिखें, ये देखें कि different sentences किस तरह बने हुए हैं, natives इस word को कैसे use कर रहे हैं, English speakers how they are using it in authentic text, how many different possible combinations we can use this text. So इसलिए अब आपको बताया जा रहा है शदीद के साथ है, लेकिन शदीद तो अब एक्सट्रीम भी होता है, काफ़ी और भी वर्ड्स है शदीद के लिए, तो ये किन किन केसेस के अंदर यूज हो सकता है. एग्रीएबल सिंपल मुत्तफिक होना, अरोमा अ प्लेजेंट नोटिसेबल स्मेल, अरोमा फ्रेश कॉफी. एसोसिएट ताल्लुक होना किसी चीज का. और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंग्विश, फर्क कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें. दिस इज वर्ब, किसी ए और बी के दरमियान में फर्क करना चाहें, डिस्टिंग्विश, you can use this. Okay, next word is elusive. Elusive is difficult to find, define, or achieve, right? Eric, as elusive as ever, was nowhere to be found. Elusive ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन करने में हमें मुश्किल हो रही हो और जिसको फाइंड करने में या अचीव करने में मुश्किल हो रही हो, दिस इज elusive. Essential जरूरी आ गया again. Feeble कमजोर, a feeble old man. Next is grimace. Let me check its pronunciation. G. Ugly twisted expression on a person's face. Grimace, grimace, G. Grimace, 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 grimace. To make ugly expression with your face to show pain, disgust. अच्छा जी, इनएविटेबल नागुजीर, उर्दू में नागुजीर कहते हैं सर्टन है, होना ही होना है, ऐसे आप इसकी जान नहीं छुड़वा सकते. इनएविटेबल, इनएविटेबल डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना. इनएविटेबली एज अ एडवर्ब भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इनएविटेबली. एंड ऑर्डर, ऑर्डर भी स्मेल को कहते हैं. जो अरोमा था वो प्लेजेंट थी, ऑर्डर जो है वो अनप्लेजेंट है, यानी खुशबू और बदबू. ऑर्डर इज एक्चुअली बैड स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल. परसेप्शन, इनसाइड, आपका जहन क्या काम कर रहा है, किसी खास चीज के बारे में सोचना, उसके बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेना, दैट इज योर परसेप्शन. द वे यू नोटिस थिंग्स स्पेशली विद द सेंस, दिस इज परसेप्शन. realm, realm of literature, an area of activity, इसको सल्तनत समझ लें, कंट्री रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, ठीक है, ये सेकंड इसका मीनिंग है. सेंसेशन, फीलिंग. स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, कोई भी स्पाउस. अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू समबडी समथिंग, उसको रिकॉग्नाइज ना करना, उसकी एबिलिटीज को, उसको